Namaste. Good morning for everyone student. Myself Dattatri Gupta. I am a physics lecturer. Today we are discussing about in physics first year syllabus part 2 track 2. The track 2 first chapter is mechanical properties of solid. Mechanical properties of solid. Here mechanical properties of solid, it is a very important and very useful chapter in even engineering also in P cycle in first year student. Mechanical properties of solid, it comes from first what is meant by solid. Solid means you already know that solid have a definite shape, size and volume, or simply we can say that what is solid means a substance which exists the solid state. It has definite shape, size and volume. It has a definite shape, size and volume. Means solid atom, it contains definite shape, size and volume. That is we call as a solid substance. And then there is no interatomic space between them. Means the atoms are very tightly strong bonded one another. Then that reason there is no intermolecular space between them, or no interatomic space between them. We call as a no interatomic space between them. There is no space, means one atoms contact with another atom, between there is no space between them. Then that means the atoms are very strongly bonded one another. Means the substance are very strongly bonded one another. Then only the substance which exists the solid state, it has a definite shape, size and volume. That is we call as a solid. Simply means कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड वेरी हार्ड, फॉर एग्जांपल हम समझो आयरन रॉड, इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस. मार्कर सॉलिड सब्सटेंस. Understand? Then means the matter exists three states. You already know the matter exists three states. One is a solid, another one liquid, and third one is a gas. Now we are discussing about in matter solid, means mechanical properties of solid. This chapter name is mechanical properties of solid. We are discussing about solid. Here after that in this chapter, the next topic is come out elasticity. Next topic in this chapter, elasticity. Elasticity means you already tell that a body, it come back when force is acting on it. Means हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स डाले समझो, वो फिर उसके शेप में आ जाता. दैट इज उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. सिंपली वी कैन राइट एज अ elasticity. Here ability of a body, it's called as a ability of a deformed material, body to return its original shape and size when applied force removed. When applied force is removed,
a body returns its original shape and size. That is we call as a elasticity. Means the ability of a deformed material, a body to return its original shape and size when deforming force is removed, or we can apply force is removed, a body come back its original shape and size. For example, हम मान लो एक स्प्रिंग ले लिया समझो, we taken a spring, when apply force means normal to the cross sectional area and apply perpendicular that spring, then force is acting on that spring, the spring will be the length, the spring क्या हो जाता, they will be decreases, means the size of the spring will be changes. Why? Because of a force acting on it. Why? Because of a force acting on it. Again we can remove it, again we can remove the force, the spring come back its original shape and size. Means this spring will come back its original shape and size. Why? Because of the spring has a each स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा, फोर्स रिस्टोर हो रहा, इसलिए क्या हो रहा उसको कम बैक इट्स ओरिजिनल shape and size. Means it is a elastic property. You already know the spring is a elastic property, and here we can take a rubber also, it is a elastic property. Means whatever it may be, when can apply force, when deforming force is applied on that body regain or returns its original shape and size. That is we call as a elasticity or elastic property of the material. For example, हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्कूल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके अंदर हम आयरन रॉड यूज़ करते हैं. That iron rod, it is also elastic property. Then that reason only we can design different types of design. We can make that buildings, different bridges, school, colleges. हम आयरन रॉड को किसी तरह के भी बेंड कर सकते, बेंडिंग कर सकते. Why? Because of that is the iron rod is also has a stronger elastic property. Then that reason only we can design different types of material we are using in nowadays with the help of all metals. Even not iron, it is all metal. It is have a elastic property, their own strength. Depending upon their own strength, there is a elastic property. Understand? That is the main thing. Elastic means is nothing but when force is acting on it, on that body or object, it when force is removed, the body does not the body return its original shape and size. इसको हम क्या कहते हैं? Elasticity कहते हैं. Example spring, and another one simply say that is a rubber is a best example for a elasticity. Understand? Next we are going next topic, plasticity. Here plasticity is very easy to understand, very easy to understand. We concluded, means plasticity means what? Plasticity means what? Here plasticity means the ability of a deformed material, means plasticity. Here ability of a deformed material, it does not return, it does not have a return. Material of a body does not return its original shape and size when deformed force is removed. When deformed force is removed, means when applied force is removed, a body does not come back its original shape and size. Means ability of, means what is plasticity? Means the ability of deformed material or body or object, it does not come back or return original shape and size when deforming force is removed. Understand? Means कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स डालें,
वो फोर्स डालने के बाद उसको रिमूव करें और बॉडी उसके शेप में रिटर्न नहीं आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं. एग्जाम्पल, द प्लास्टिक बॉटल, सिंपली से दैट प्लास्टिक bottle is a good example for a plasticity. And another one is polythene cover. Polythene cover, it is also good example for a plasticity. Or simply we can say that wheat atta or jawar atta, whatever it may be. Here means it does not come back. एक प्लास्टिक बॉटल के आप हम फोर्स लगाए समझो, वो रिटर्न नहीं आ रहा, क्यों? दैट इज अ प्लास्टिक मटेरियल, दैट इज प्लास्टिसिटी. Elasticity means different. A body come back its original shape and size when deforming force is removed. Here हम फोर्स रिमूव कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी रिटर्न नहीं आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी कहते हैं. एग्जाम्पल, गुड प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन कवर, और सिंपली से दैट wheat atta. That is the main thing. Understand plasticity and elasticity. After that, understand, very easy. Means कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाए समझो, वो रिटर्न उसके शेप में नहीं आ रहा. समझो ये प्लास्टिक बॉटल है, हम फोर्स लगाए समझो, उसका शेप कैसा, तो बॉडी कैसा चेंज हो रहा? लाइक दिस शेप. कम बैक नहीं हो रहा. व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, फोर्स लगाने के बाद उसका शेप क्या हो रहा? चेंज हो रहा, बॉटल का, प्लास्टिक बॉटल का. आफ्टर हम फोर्स रिमूव होने के बाद भी वो रिटर्न नहीं आ रहा, क्यों? दैट इज अ प्लास्टिसिटी मटेरियल. प्लास्टिक प्रॉपर्टी, दैट इज, हम उसको क्या कहते हैं? हम प्लास्टिसिटी कहते हैं. इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ प्लास्टिक बॉटल हैज अ गुड एग्जाम्पल फॉर अ प्लास्टिसिटी. अंडरस्टैंड? मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाए समझो और बॉडी रिटर्न नहीं आते, मीन्स इट डज नॉट कम बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट हियर स्ट्रेस. We are discussing about stress. We are discussing about next stress. What is stress? Stress is nothing but a force. We call as a stress is nothing but a force. Just write as next topic is stress. Stress is simply say that the restoring force per unit area. The restoring force per unit area if when a force is applied normal to the cross sectional area of the body, that is we call as a stress. Simply say that the restoring force per unit area when force is applied normal to the cross sectional area of the body, that is we call as a stress. Simply say that the restoring force per unit area, restoring force per unit area when force is applied normal to the cross sectional area of the body or object. इसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेस. मीन्स द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस. सिंपली वी कैन से दैट, मान लो हम एक स्पंज ले लिया और मान लो और स्प्रिंग ले लिया समझो.
इस स्पंज के ऊपर हम फोर्स लगाए समझो, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू दैट बॉडी, मीन्स स्पंज विल बी क्या होता, घटता, क्यों, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मीन्स force is applied on it, then sponge will decreases with respect to their size will be decreases. मान लो फोर्स लगाने के बाद स्पंज क्या हुआ, लाइक दिस शेप, मीन्स इस शेप के शेप उसका चेंज होने के बाद पर यूनिट एरिया ऑफ द स्पंज के अंदर क्या हो जाता, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी स्टोर, मीन्स फोर्स उसके अंदर रिस्टोर होता है। स्पंज के अंदर फोर्स क्या होता, पर यूनिट एरिया ऑफ द स्पंज के अंदर फोर्स क्या होता, रिस्टोर होता, देन उसकी वजह से वो स्पंज क्या होता, रिटर्न कम बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, रिटर्न कम बैक इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मान लो सेम वी कैन टेकन सेम, मान लो हम एक स्प्रिंग ले लिया, समझो मान लो हम एक स्प्रिंग ले लिया, उसके ऊपर फोर्स लगाया नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट। ये फोर्स क्या हो रहा है, नॉर्मल मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर दैट ऑब्जेक्ट, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, मीन्स द फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, दैट मीन्स स्प्रिंग क्या हो जाता, फोर्स लगाने के बाद दे विल बी चेंजेस देयर शेप, शेप तो चेंज होता है, फिर बाद में क्या होता है, द पर यूनिट एरिया ऑफ द स्प्रिंग के अंदर, पर यूनिट एरिया ऑफ द स्प्रिंग के अंदर फोर्स क्या होता है, रिस्टोर होता, पर यूनिट एरिया ऑफ द स्प्रिंग के अंदर फोर्स रिस्टोरिंग इट, फोर्स इज रिस्टोरिंग इट, then that reason only we can remove that force, it come back its original shape and size, why, because of the per unit area of स्प्रिंग के अंदर फोर्स क्या हो रहा, रिस्टोर हो रहा, रिस्टोरिंग मीन्स फोर्स रिस्टोर हो रहा, देन उसकी वजह से क्या हो रहा, they will be come back its original shape and size, understand, it's come back its original shape and size, that's the main thing, that's the main definition. Simply say that the stress means the restoring force per unit area when force is applied normal to the cross sectional area of the body. Then SI unit is, simply say that SI unit of stress is Newton per meter square, SI unit of stress is Newton per meter square, understand, simple definition, then understand clearly. Then next we are discussing about first we are dealing with who is proposed law of elasticity, who proposed, any idea who proposed the law of elasticity, मालूम है किसी को, okay, we are in year of 1676, as the name of the scientist, his name is Robert Hooke, Robert Hooke is explain the law of elasticity. Law of elasticity means year of 1676 the Robert Hooke ने क्या किया, law of elasticity इंट्रोड्यूस किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और इट मे बी प्रेजेंटेड इन ईयर ऑफ 1676, मीन्स इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसे होते उन्होंने बताया, उस नेम इज रॉबर्ट हुक, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, मीन्स उन्होंने क्या किया, एक बॉल ले लिया, समझो एक बॉल ले लिया, प्लास्टिक स्प्रिंग बॉल ले लिया, उसको हम डिफॉर्म फोर्स लगाए, समझो आई एम एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंड, मीन्स ईयर ऑफ 1676